चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर सम कंपोनेंट्स दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. ये कुछ स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है जो कि कर रहा है हमारा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है. फर्स्ट इज मोनोमेरिक जी प्रोटीन. ये जो मोनोमेरिक जो जी प्रोटीन जो प्रेजेंट है, इट इज हेल्पिंग इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन. इट इज नॉट हेल्पिंग इन द फ्लूइडिटी. नेक्स्ट इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो प्रेजेंट है, ये पेरिफेरी में प्रेजेंट रहता है. इट इज नॉट प्रेजेंट इंसेंट्रिकली, इट इज प्रेजेंट इन द periphery region. Okay, so it can be towards the cytosolic region as well as a non-cytosolic region. That is the reason it has no connection between the membrane fluidity. Next is the sphingolipids. The sphingolipids which are present, they are having a large head group. Due to this large head group, they can also help in the membrane fluidity, because when these two large groups, head groups are present, between them there can be more space. Due to this, it can have the fluidic nature because it is not compact in nature. Okay. Next is the phospholipid side chain saturation. When the fatty acid is saturated, it is having a single bond between the carbon atoms. Okay, but when it is unsaturated, it is having double bond between these two carbon atoms, due to which there is formation of kink-like structure, and due to this there is fluid nature. So option 4 is also responsible for the fluidic nature. Next is the cholesterol. Yes, this cholesterol is necessary for maintaining the plasma membrane. Like when there is more fluid, this cholesterol will help in the filling the gap. Okay, when it is more fluid, it will fill the gap to make it stable. And if it is too much rigid during this time also, what it will do, it will present between these two fatty acids, so that it will not be too much rigid, because when there is too much rigidity between these two lipid molecules or between the plasma membrane, the cell will rupture. So for preventing this cholesterol is required. Okay, so option number 4 is also the correct statement. This cholesterol is responsible for maintaining the fluidity. Option 3, 4 and 5 are the correct. So यहाँ पे कहाँ option number C पे है 3, 4 and 5. Grafts are rich in both sphingolipid and cholesterol. Cholesterol plays a central role in graft formation, since lipid grafts apparently do not form in its absence. Why do you think cholesterol is essential for the formation of lipid graft? Okay, ये क्या बोल रहा है, ये जो sphingolipids and cholesterol जो present है, they both are involved in the formation of lipid. लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट है, ये मेन रोल प्ले कर रहा है ड्राफ्ट फॉर्मेशन के लिए. ओके, लिपिड ड्राफ्ट अपेरेंटली डू नॉट फॉर्म इन दिस एब्सेंस. मतलब ये जो लिपिड ड्राफ्ट जो प्रेजेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल के एब्सेंस में ये नहीं हो सकता है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें करेक्ट ढूंढना है अबाउट द कोलेस्ट्रॉल? फर्स्ट ऑप्शन इज cholesterol decreases the mobility of sphingolipid in the lipid bilayer. Why this cholesterol will help in decreasing the mobility? The sphingolipid which is present, it is having a large head group, okay, and a tail. So here when that is large head group, so here the space between these two fatty acid will be more. यहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ स्पेस होगा, जिसके वजह से यहाँ पे फ्लूइडिक नेचर हो सकता है. Okay, so for maintaining this, ये जो cholesterol molecules जो present है, by forming the lipid raft or this cholesterol molecules alone, what they will do, they will bind with this, in this they will be filled over here. This cholesterol molecules will be filled over here. This cholesterol molecules is also having a hydrophilic head group. Okay, if ये जो cholesterol molecule जो है, इसका hydrophilic head group present है, so this will be helping in the filling the group. In this way, this lipid raft is formed, but this cholesterol will not help in decreasing this mobility of this sphingolipid. Okay, so option A is the incorrect one. Next is option number B. Large head groups of sphingolipids repel each other in the presence of cholesterol. No, they are not repel. ये repel क्यों होगा? यहाँ पे जो फ्लूइडिक नेचर होना चाहिए था, यहाँ पे ये जो हेड ग्रुप, लार्ज हेड ग्रुप जो प्रेजेंट है, इस वजह से जो फ्लूइडिक नेचर हो सकता था इन दोनों फैटी एसिड के बीच में, जो ज़्यादा गैप प्रेजेंट था,
सो फॉर प्रिवेंटिंग दिस कोलेस्ट्रॉल इज यूज, लेकिन ये जो हेड ग्रुप जो बड़ा है इन दोनों स्फिंगोलिपिड का, इनके वजह से कुछ रिपल नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट्स विद फैटी एसिड टेल्स इन द मेम्ब्रेन. ये जो प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है ये गैप को फिलअप कर रहा है. इट इज नॉट इंटरैक्टिंग विद दिस फैटी एसिड ऑफ द स्फिंगोलिपिड. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. The planar cholesterol molecules are postulated to fill the voids that form underneath the large head group of the sphingolipid. Yes, this is the correct option. ये जो large sphingolipid का जो head जो present है, ये large head के वजह से जो gap present था, these gaps are known as the voids. तो इसको fill up करने के लिए हमारा cholesterol चाहिए. Okay, like here you can see ये जो cholesterol molecules जो present है, it is helping in filling the gap between these two sphingolipids. Okay. Now the following is abundant in the plasma membrane of mammalian cells but is absent for most prokaryotic and plant shell membrane. So ये पूछ रहा है कि एनिमल शेल में स्पेसिफिकली कौन सा, इनमें से कौन सा प्रेजेंट होगा. इट इज द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द animal cell but it is absent in case of prokaryotic cells as well as the plant shells. In eukaryotic cells covalently attached lipids. eukaryotic cells में जो lipid molecules जो present है, they are covalently attached, help to anchor some water soluble proteins to the plasma membrane. ये क्या कर रहे हैं, कुछ water soluble proteins को attach करने के लिए help कर रहे हैं through the covalent bond. Okay. One group of cytosolic proteins are anchored to the cytosolic phase of the membrane by a fatty acyl group. Okay, ये क्या बोल रहा है, cytosolic proteins जो present है, it is bounded towards the cytosolic phase of the membrane. किसके साथ वो बाइंड हो रहा है, with the fatty acyl group. वो fatty acyl group क्या हो सकता है, it can be myristate or palmitate. These groups are generally covalently attached with which amino acid present at the end terminus of the polypeptide chain. ये पूछ रहा है कि ये जो covalently जो attach हो रहा है lipid molecules, protein molecules के साथ, प्रोटीन का किस मॉलिक्यूल, किस एमिनो एसिड से ये अटैचमेंट हो रहा है. ओके, सो द ऑप्शंस आर ग्लाइसिन, टायरोसिन, सेरिन और लाइसिन. सो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले वी नीड टू बी वेरी क्लियर विद सम प्रोटीन्स, द बॉन्ड बिटवीन द प्रोटीन्स. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवलेंट अटैचमेंट हो रहा है. ठीक है, ये जो कोवलेंटली अटैच जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है लिपिड के साथ, इट कैन बी टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड एज वेल एज नॉन साइटोसोलिक साइड. अगर ये प्रोटीन का अटैचमेंट हो रहा है हमारा नॉन साइटोसोलिक साइड पे, इन द नॉन साइटोसोलिक phase, it can be GPI linked protein. It can be GPI linked protein. और इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, इनके बीच जो बॉन्ड होगा that is the glycosidic linkage. Okay. नेक्स्ट होगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट है टूवर्ड्स द साइटोसोलिक फेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये कौन कौन से प्रोटीन्स किस टाइप के हो सकते हैं, इट कैन बी पेरिनाइलेटेड प्रोटीन एज वेल एज फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन. ये जो पेरिनाइलेटेड प्रोटीन जो प्रेजेंट है, इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इट्स एग्जाम्पल आर जेरेनाइल linked protein and farnesyl linked protein. ओके, और ये जो प्रेजेंट है, इस जो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, ये जो अटैचमेंट जो होगा, इट्स अटैचमेंट इज इन द एमाइनो एसिड दैट इज द सिस्टीन. ये सिस्टीन एमाइनो एसिड के साथ बाइंड होगा. एंड इन दोनों के बीच जो लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन के बीच जो बॉन्ड होगा दैट इज द थायोईथर बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट, ये जो प्रेजेंट है फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन, इसका भी टू एग्जांपल्स है. वन इज द पाल्मिटिक एसिड और सेकेंड वन जो प्रेजेंट है दैट इज द
माइरिस्टिक एसिड। ये जो पैल्मिटिक एसिड जो प्रेजेंट है, ये जो पैल्मिटिक एसिड और जो लिपिड का जो बॉन्ड होगा दैट इज द थायोएस्टर बॉन्ड। ये होगा हमारा थायोएस्टर बॉन्ड। एंड द एमाइनो एसिड्स विच आर इन्वॉल्व दे आर द सिस्टीन और सेरीन। और ये जो माइरिस्टिक एसिड जो प्रेजेंट है, जो बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा बिटवीन द प्रोटीन एंड द लिपिड मॉलिक्यूल्स, इट इज द एमाइड बॉन्ड। और जो एमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे दैट इज द ग्लाइसिन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, ये पूछा था कि माइरिस्टिक एसिड और पैल्मिटेट जो प्रेजेंट है उनका जो एमाइनो एसिड जो रिस्पॉन्सिबल है व्हाट इज दैट, मतलब एन टर्मिनल। एन टर्मिनल जो प्रेजेंट है वो कौन सा हो सकता है, द एन टर्मिनल एमाइनो एसिड, सॉरी द एन टर्मिनल एमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट in the protein, what can be it? Can anyone try to solve? Glycine, ये जो present जो है, ये जो covalently attached amino acid है, it is the glycine. So here you can see it is the glycine. Myristic acid का जो example है, it is by the amide bond and it is for the glycine. So option number A is the correct one. Okay. Sphingolipids and cholesterol molecules of the lipid bilayer aggregate into multiple tiny rafts instead of a single large one. ये क्या बोल रहा है, स्पिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन, ये क्या कर रहे हैं, ये एग्रीगेट हो रहे हैं इनटू टाइनी राफ्ट। ये जो राफ्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, छोटे छोटे राफ्ट फॉर्मेशन हो रहा है इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लार्ज वंस। ओके, कंसिडरिंग द साइज ऑफ ए लिपिड राफ्ट डिपेंड ऑन द एफिनिटी ऑफ स्पिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर वन अनदर एंड अदर लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन। ये क्या बोल रहा है, ये जो लिपिड राफ्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एफिनिटी ऑफ स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर वन अनदर एंड अदर लिपिड्स। इट इज फॉर वन अनदर एज वेल एज, और जो लिपिड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड है इन द मेम्ब्रेन। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस प्रॉपर्टी। A is S and C binds to one another tightly and independent of any other molecule. ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि it is dependent upon other lipid molecules as well. So how can it be the correct one? It is not independent. It is dependent upon some other lipid molecules as well. Okay. So this is the incorrect option. Next, sphingolipid and cholesterol bind to one another with the same affinity as they bind to other lipid species of the membrane. अगर ये सेम स्पेसिफिसिटी अगर ये होगा बाइंड करने का, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड द लिपिड ड्राफ्ट? सो देयर इज ए हाई एफिनिटी बिटवीन द स्फिंगोलिपिड एंड cholesterol molecule. Okay, so this is the incorrect option. Next, the third option, sphingolipid and cholesterol bind to one another with high affinity अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम साइटोस्केलेटल एलिमेंट। ये जो लिपिड बाइलेयर जो प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ साइटोस्केलेटन लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन और ये लिपिड बाइलेयर में कहीं पे भी साइटोस्केलेटन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो सी इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज डी, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल हैव स्लाइटली हायर एफिनिटी देन अदर लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम with their free forms. Yes, this is the correct option. ये जो स्फिंगोलिपिड है और ये जो कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट है, it is having a little higher affinity than the other lipid molecules. Okay, so option D is the correct statement.